the point is, this politics, whether it's on air pollution, it's always, farmers in Punjab are doing it, farmers in Haryana are doing it, which is also a fact. Nobody is denying that, the farmers in Punjab and Haryana are not stubble burning. That's a significant contributor to air pollution. But in the case of water pollution also now, there seems to be this political slugfest. I want to move beyond the political slugfest, Anshuman, and ask you, what is it that can be done to clean up the Yamuna? We have seen after, for example, Namami Gange, the Ganga also, which used to be polluted up until 5-7 years ago in large parts of it have been cleaned up under Namami Gange. Again, that river runs across multiple states. It's not like, only one party is ruling in these states. So if that can be done for the Ganga, why can't it be done for the Yamuna? So let me start by saying that you picked up a very good example. In a sense, I was speaking to Mr. Mishra, Rajiv Ranjan Mishra, DG and MCG today about the achievements of in the Namami Gange program. And I think that could be a good template. What we are talking about is years and years of, untreated or partially treated sewage finding its way into the river and water bodies. And that's the very first step that we need to, take up. River management is not just treatment of wastewater and infrastructure creation. It is about basically integrated approach wherein you have to focus on, as the Namami Gange program has Nirbal Dhara and Aviral Dhara. So focus on the pollution part and focus on the demand management, efficiency, and reduction of supply side, demand side management and supply side management. It's a combination of both of these. If you talk about existing sewage treatment capacity, it's improved as far as Yamuna is concerned. But if you look into the compliance of the STPs, you will find a very meager percentage is basically compliant to the water quality that is required of water quality criteria. And that's where the burden and the concern is. It affects the health. It affects the health of human being. It affects the health of ecosystem. I think that's where we have to start with. Firstly, capture the sewage from all the locations where this is generated, treat it, and then basically discharge and possibly go into recycle and reuse. That's one part of it. The second part of it is we need to be efficient in our water usage, and basically bringing in demand side management wherein support of water conservation, adequate water pricing, basically instilling water conservation behavior in public will actually as well simultaneously be required. I want to go to Acharya Vikramaditya. Acharya, ye bataiye, look at these images. We've been having these images for the last 3 days. Women standing in this toxic froth in the Yamuna, some of them dipping their hands, dipping their heads, some of them even drinking that water. Kaun inko samjhayenge ki, I mean, this is bad for your health. Yes, we understand faith. Yes, we understand the importance of Chhat, but it can be done in any water body. And the point that the Aam Aadmi Party government has been making is that they have made some 800 man-made water bodies across Delhi just for Chhat. Ye Yamuna Ghat pe hi karna hai, iski kya zarurat hai? See, I think आचार्य विक्रमादित्य, जाका बहुत दुखद है जिस प्रकार के सीन्स आप जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का पानी पॉल्यूटेड है और उसके अंदर लोग डिप लगा रहे हैं, होली डिप लगा रहे हैं। ये जो व्यवस्था है, देखिए भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है और जमुना, गंगा इत्यादि नदियों का हमारे आध्यात्मिक महत्व रहा है। और जिस प्रकार से पिछले लगातार आज़ादी के बाद से उपेक्षा रही हमारी नदियों के बारे में, आपने आधा साइंटिफिक अप्रोच लिया, आपने सैनिटेशन सिस्टम डेवलप किया लेकिन उसका वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया। और बड़ा अभी अजीब सा डाटा दिया जा रहा था यहाँ पर कि जो अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए हैं और वो काम कर रहे हैं, इतने परसेंट हो गए, 90% तक हो गए। आपको याद होगा भी लॉकडाउन के अंदर यमुना बिल्कुल साफ थी, पानी बिल्कुल, आप जाके पानी को हाथ में ले सकते हैं। मैं खुद जाके देख के आया था कि लॉकडाउन के अंदर पानी बिल्कुल साफ था। कोई कारण क्या है? क्योंकि यहां पे करप्शन लेवल इस प्रकार का है, काम ही नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर कोई जो प्लांट इंडिविजुअल लेवल पे चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, लोग तो तब भी कॉलोनीज में ही रह रहे थे, लोग तब भी कॉलोनी में रह रहे थे। आप कॉलोनीज के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, वो पानी तब भी आ रहा था, परंतु जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बंद था, उसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड बंद हो गया था। और दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो वजीराबाद से पहले पानी बिल्कुल साफ है साहब। वहां वजीराबाद बैराज के पास जाके आप नहा सकते हैं, देख सकते हैं, पानी इतना गंदा नहीं है। लेकिन दिल्ली में नजफगढ़ के नाले के बाद से जो ये लगातार जिस प्रकार का पॉल्यूशन किया जाता है और उसकी केवल राजनीति हो रही है, कुछ नहीं, चाहे कोई भी पार्टी है, एक फुटबॉल मैच की तरह हो रहा है, वो उसके ऊपर बॉल फेंक देता है, वो उसके ऊपर पहल फेंक देता है, कुछ नहीं हो रहा है साहब।
जिस प्रकार का 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ बर्बाद कर दिया जाता है, और तथाकथित तौर पर एक गरीब आदमी के लिए क्या किया आपने? पानी की बॉडीज बना दी अमीर आदमी के लिए, गंगोत्री से पानी लाकर, गंगा जी से पानी लाकर उन वाटर बॉडीज में भर दिया, लेकिन बेचारा गरीब आदमी जो यहां मजदूरी करने आता है, क्या उसको घुसने दे रहे हैं वहां पर आप लोग? और दूसरा साहब, जाका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं यहां कहता हूं कि दिल्ली में ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जनरेटर बंद कर रखे हैं। आज जितनी वाटर बॉडीज 800 वाटर बॉडीज जो बनाई गई हैं, वहां सब जगह 5-5 जनरेटर चल रहे हैं। क्या वो बताएंगे मुझे इन पॉलिटिशियंस कि क्या हो रहा है कि एक आम आदमी अपने घर में लाइट चली जाए तो जनरेटर नहीं चला सकता? आपने केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज हर जगह 5-5 जनरेटर, हवा खराब है, पानी खराब है। Answer the first point that Acharya Vikramaditya raised, that if you go outside of Delhi, if you go beyond the industrial ring of Delhi, this same water is clean. In fact, he's right. You can put your hand in and you can drink that water. So it's evident. And when the lockdown happened, he's also right. When the lockdown happened, the Yamuna water was clean. It was perhaps the first time in 20-30 years that we had such an experience. So we know that the main culprit is industrial effluents. Now, whose responsibility is it to regulate those industries, ensure that the waste that they discharge is treated before it hits the Yamuna barrage? Zaka, you tell me, where do you see more industries, in Delhi or in states outside Delhi? You know that there are very strict NGT and Supreme Court orders by which the most polluting and hazardous industries are all moved out. And that is why you are right. You know, majority of the pollution is happening in the example of Wazirabad barrage. After Wazirabad barrage, there is a Nazargarh Nala is there. Nazargarh Nala, उनको जवाब देने दीजिए आचार्य जी, उनको जवाब देने दीजिए आचार्य जी, एक सेकंड उनको जवाब देने दीजिए। मौका दीजिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। वजीराबाद बराज के बाद जो नजफगढ़ ड्रेन मीट होता है, नजफगढ़ ड्रेन का 100 MGD का हिस्सा हरियाणा के इंडस्ट्रियल बेल्ट से आता है। सिमिलरली शाहदरा ड्रेन जो ओखला बैरेज के बाद मिलता है, उसमें 50 MGD यूपी की इंडस्ट्रियल बेल्ट जो सहारनपुर से लेके मुजफ्फरनगर से होके आती है मेरठ, वो बेल्ट से आता है। और ये CPCB की रिपोर्ट जो NGT को दी गई है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये 150 MGD इज टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट विच हैज नो काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी रिपोर्ट से इसके सारी चीजें हैं, लेकिन who will hold the UP and Haryana governments accountable for this 150 MGD of waste? Yes, please hold us accountable for the waste that is coming from Delhi. We are fully accountable. And we are making the state-of-the-art sewage treatment plants. We are connecting all the unauthorized colonies to the sewage treatment infrastructure, which had never happened in 70-75 years. But we have done a lot of work in the last 5-7 years. But okay. 150 MGD, if toxic effluents are coming into Yamuna, then Anuja Kapoor, 150 MGD of toxic effluents are coming from UP and from Haryana. You can't hold the Delhi government to blame for that. That's what Jasmine Shah is saying. Anuja. Now, I understand the complications which are happening right now here. I would just ask Jasmine, being the Delhi state government, can't you take a meeting? Now I heard that Arvind Kejriwal is taking the meetings with UP and Haryana people. So can't you take the meeting before? Why are you here and crying about it? Because you waited for so long. Don't you think that people know about what you guys are doing? Listen, I am, don't speak in between, sir. Don't, Jasmine ji, don't speak in between. Let me speak. This is what is your problem. This is the problem of Aam Aadmi Party कि उनको हर जगह कूदना होता है बीच में. उनकी इतनी लंबी टांग है कि वो हर जगह कूदते हैं. Because you people believe that one day Arvind Kejriwal will become a Prime Minister of India. That is what he believes in. But do you know, if you cannot handle Delhi, give it to BJP. We will do it. We will doing India very well. We will take care of Delhi. Please leave this area. And everybody knows about it. No, everybody knows about it. And don't blame UP and Haryana. What is it that Mr. CM is doing? CM has powers. CM has powers. When he has to vote and speak something, then he will go to LG Saab. You have powers. Okay. You could have taken the meeting. You could have done this. Okay, I got to wrap up. All I'll say as I